Am I audible? Yes, you're audible. Yes. 1 second. वेब डेवलपर ग्रुप अपने हैंड्स रेज भी रखेंगे एंड अपना कैम भी ऑन करेंगे. So, yeah. Hi, my name is Shakamar Pujari from Web Developer Group. And today, me and my team would be helping you understand to design a doctor's appointment page and how to go about it. So, these are the table of contents which we will be covering throughout the presentation. So as you can see that me and my team were assigned to design a doctor's appointment page, which specifies the user's requirement and satisfies what the users ask for. So while designing to understand how to design, we had to go through certain videos in which we learned about the SDLC model. Second, we were understanding how the design process works. Also, under requirements, also we were understanding what were the user requirements of the doctor. As we can see that there is a playlist on the bottom right corner, which has approximately 38 videos. So there were what all requirements were required by the doctor in that video that we got to see. Now I would like Aditya to go forward with telling you the process of designing. Thank you, Sakambar, for giving the intro. Now I would be proceeding with the process of designing the file. To design a website, we can use either of the two software. One is Figma and other is Adobe XD. Now, most of us Sorry we for the have made interruption. on Figma. Now I would be proceeding with the process of designing the files. To design a website, we can use either of two softwares. One is Figma and other is Adobe XD. Most of us have made on Figma, so we will proceed with Figma. In a Figma, we need to follow two steps. Uh, to find in Figma, we need to follow two steps. We need to find appropriate template, import them, and open them in desktop mode. Now, everything made in template needs to replicated using the Figma design tool, and in the end, hiding the original template to get our design. One can share these design file using the top left share button. Now I would like to Succumber to explain the Anima code generation process. No, yeah. So I will be proceeding with the Anima code generation process. So thank you for the explanation, Aditya. Now we would be using the Anima app for generating the code of our user design. To do this, we have to select all the layers, as you can see on the left-hand corner, and click on the plugins button. This opens a new window, which is as a pop-up, which you can see in the middle of the screen. And on the bottom left corner, there is a get code button, which allows you and directs you to another page. On this page, you can get the code and export all these codes which of the design which we have made. And you can see the HTML and CSS file already on the screen. One can download it as a zip and host it when they want it to. I would now like Chiranjeev to explain you the part of hosting. Last step is to upload the HTML and CSS code onto a hosting website like GoDaddy or Netlify. As Netlify is free, we uploaded the folder on Netlify's website. Before uploading the HTML files, make sure that the main page of the HTML file is renamed as index.html and upload the entire folder consisting of all the HTML and CSS files. After uploading the folder, an unique URL will be provided on which we can see the doctor landing page. This is the process by which we made the landing page of the doctor appointment website. Next, we will work on the documentation from Handsoft app.
You can contact us on our Trello handles, which are being displayed on the screen. Thank you. Yes. Do we have any live demonstration also for the export codes which has been deployed? Am I audible? Shakambar, your voice is not audible to me. Guys, are you able to hear Shakambar? Guys, am I audible to you? Hello. Is my voice audible to you? Anima ex- by default, it was in only, but if you are working in Anima, you have to select your team. So this was the project which be in the Anima folder. All these things would be synced in the Anima app. So to get uploaded on the Anima app. Under which some exports have already been taken place. So let it load. So yeah, so a few seconds ago, my file was uploaded. Let it load, yeah. So when I click on view screen, so the same window which we show in the PPT also comes here. Yeah. So this is all the HTML code, and which has some input elements, divs, h1 tags and all. And this is the CSS, which is used for styling. And these are the root colors which were used. Done. Shakambar, is my voice audible? Yes, sir. Okay, so I was just asking, Yes. have you deployed it on any hosting website? So yeah, me and some other people have. So we have deployed it on Netlify. So I will just show it to you. Right, right, right. Yeah. Yes.
see the screen. So here we deploy it on Netlify, and we post. And while deploying the site, we can set up a custom domain, but it requires us to buy a custom domain. So for now, it has been deployed on the Netlify app. So it provides us a unique URL, and when we click on the URL, it takes us to the site where it is deployed. And as you can see, it has been deployed on this server. Yeah. Okay, that's great. Yes. So, guys, I think the presentation was very good, and the PPTs and everything, whatever you have made, was very meaningful. There's a quote for this: less with more. So the content was less on the PPT, but it was more, with respect to understanding, and the explanations were good. Now I want the other team members to start their confrontations. So team audience, raise your hands so that we can name, and you can start doing the confrontations. Team web developer, turn down your hands, please. So all the team members, team audience, raise your hands. You have to start your confrontations about the presentation, about the points which you find needs to be worked on, as well as what you will be doing. You will start your introduction. First, you will let us know what have you understood from the presentation, then followed by the confrontations. Am I clear? Okay. Okay. So everybody, I couldn't see other people's raising their hands. Divakar, Neha, Pavan Rahul, Prabjot, Sampurna Pandit, Shakambar. Shakambar is the team presenter. Somyak Ranjan, Sushil Shinde, Yash Javle. Please raise your hands. Somyak, are you here? Everybody needs special invitation to raise their hands. Chalo, anyways. So we'll start with Khadir Pasha. Khadir, please go on with your confrontations. So, so today's rule is introduce yourself, your name, your group, then what have you understood from the presentation, and then the confrontations. Hello team. I'm from data engineering team. Today, confrontations will be provided based on the web development. So first, what my understanding is, like some more slide has to be added in the presentation. So what is the flow of web development from the basic to some lights has to be so when the new member has no idea about web development, he will be come to know what is this what is your work is going on. Some additional theory slides to basically what is the requirement you are capturing where this web development you have been said like it is used in the medical domain. You have said right, but we don't know what is the requirement like HTML or CSS or what type of language it is used, and we were not aware what is the requirement of the project. You could have said the requirement of the project, then you would have continued. That's my confrontation today's web development meeting.
Okay, fine. So Thank you. these are the confrontations from Khadir. So see, point number one, flow of web development and as a beginner friendly is is a point of conversation. We will discuss on it later, because since it was a project presentation, it is not necessary that all the beginner, because this is not a workshop. Okay, this was the web developer group's project presentation, what they have accomplished. So flow of web development and addition of slides, that I would consider void for this confrontations. Other were good, that what languages have been exported and used. So it could be added on the slide. It could have been one more slide could have been added. And understanding the project requirement would have been the first, second or third slide, where you would have explained that, so we got a requirement from the client that we have to build an appointment page for the doctor. And what are the initial requirements for an appointment, that could have been explained, that we need the username, we need the mail. So we designed it in Figma, then we have exported that design to the code. So the basic objective behind this is that you don't need to code the front end part. Here we are much focused on how we can minimize our work as a front end developer. We can do our designs easily, and then we can export those designs into HTML and CSS. Whatever we want to design, we are capable enough to design. If we have any thoughts in our mind, we can design that in Figma, and accordingly it can be exported in HTML. Sometimes it may not be exported 100% as we have designed. So a little tweak would always be required. Okay. So modification of HTML and CSS. So we cannot say that you do not need any knowledge of HTML and CSS. That is not true. You do need to have knowledge of HTML and CSS, but a lot of work, starting from scratch and writing the code from scratch in HTML and CSS would have taken creation of this page a very, very long time. But using the tools like Figma, Anima, we could have do it in a very, very less duration of time. Okay. So that was, there were some more points like time saving, that what was the process and how the process benefited you, how the process benefited your group. Okay. And what were your perception earlier before this project, and what was the perception post using these tools, how friendly they were. Okay. So these points could have been added, so which could have made the presentation much, much better. So with respect to Khadir, languages, tools, and a flow could also have been added. And initially the user's requirement, that what was the requirement, what you built, what tools you used, and what was the output. Okay. But still, I would like to say, you had the hook, you had the offer that this is how it could have been exported, but a little story was missing, which could have been filled with the project requirements part, that this was the requirement and this is how we built. So in every presentations, you all have to take care for what would be the hook. So hook could have been that in today's presentation, you all will understand that how you can quickly design any web page on Figma, and without the knowledge of programming, without the knowledge of HTML and CSS, you can quickly export it into your web page. So that could have been a hook, so that you get the attention of your audience and they would get interested कि अच्छा चलो भाई मैं भी सीख लेता हूँ ये बात, क्योंकि मेरे को बेशक मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ पर फिर भी बना पाऊंगा. ठीक है. फिर आपको एक स्टोरी नैरेट करना चाहिए. स्टोरी नैरेशन का मतलब ये हो गया कि हमें एक डॉक्टर ने एक रिक्वायरमेंट दिया, या हमारी टीम से हमें एक रिक्वायरमेंट मिला जिसमें हमें डॉक्टर्स के लिए एक अपॉइंटमेंट पेज बनाना था. हमने कुछ वेबसाइट्स को रेफर किया. उन वेबसाइट्स को रेफर करने के बाद हमने फिग्मा टूल यूज करके वैसे का वैसा एक कॉपी डिजाइन बनाया और अनीमा टूल को यूज करके उसे हमने HTML CSS में एक्सपोर्ट कर दिया. तो हमारा बहुत सारा समय जो डिजाइनिंग में लगता है, जो कोडिंग में लगता है, वो सेव हो गया. ठीक है. और एक रिलेटिव कंपैरिजन भी दिखा सकते थे स्टोरी के अंदर, ताकि यूजर को ये हो जाए कि हाँ ठीक है भाई, मतलब ये अच्छी बात है कि अगर हम HTML CSS में बनाते राइट फ्रॉम स्क्रैच, इट कुड हैव taken 30 days, but
अनीमा और फिग्मा और XD का कॉम्बिनेशन यूज करने की वजह से शायद हमने 2 दिन में ही प्रोजेक्ट को बना दिया. तो वी हैव सेव्ड अराउंड 28 days, so which is too big, you know. It's very what do we say, वो कहते हैं ना, एक टर्म यूज करते हैं कि अगर मतलब वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी फॉर द कंपनी, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इवेंचुअली हमने रिड्यूस कर दिया. क्योंकि अगर वो डिजाइन हम 30 दिन में बनाते तो हमारी कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाती, सर्विस कॉस्ट, रिसोर्सेस कॉस्ट, ये सारी बढ़ जाती. बट अभी क्योंकि हमने 2 दिन में एक्सपोर्ट कर लिया तो हमारे पास टाइम बहुत सारा बच गया बैकएंड के ऊपर काम करने के लिए, बेटर डेटाबेसेस डिजाइन करने के लिए और उसको इंटीग्रेशन करने के लिए. और हम कस्टमर को उसकी सेट डेट से पहले भी हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छे पॉइंट्स और ऐड कर लोगे तो प्रेजेंटेशन एकदम जबरदस्त हो जाएगी. बाकी जितनी थी वो बढ़िया थी, परफेक्ट थी, कुछ ऐसी खास गलती मेरे को मिली नहीं. बट एटलीस्ट सबको, क्योंकि 3-3 कन्फ्रंटेशंस देनी है वरना उनके ऊपर लर्निंग एक्सपीरियंस लगेगा, तो 3-3 गलतियां तो कम से कम चाहिए. बाकी जो ज्यादा बता सकते हैं और भी अच्छी बात है. ठीक है, तो खदीर का पार्ट हो गया. मूविंग ऑन टू अक्षय मिश्रा. Hello, everybody. I'm Akshay Mishra from Python Developer School. I would like to confront some points regarding the presentation. अक्षय, The first कैमरा. So the first confrontation is the fonts which you have used for the heading and subheading. They were completely different. If you could have used a similar type of font, then it would be better. And the second confrontation is like conclusion part, which it was missing at the last. Like if someone have joined it, then it would be better for them to understand what the presentation was about. And the third concept confrontation is I think you have forgot about the live demo part at last. That's great. Thanks, Akshay. You forgot the live demonstration part. Okay. 3 confrontations हो गई. Moving on to Navraj Mehto. Hello. Hello, my name is Navraj Mahto from cybersecurity domain. Uh, First of all, I want to say that congratulations to the web development team for the good presentation. This is a web presentation, web development presentation, where with the help of Anima application, we are saving a lot of time to convert a page into web page and hosting it. And there are some confrontation regarding the presentation from my side. First of all, I want to say that the font size is really small. It is hard to read, and there is no header in the slide that gives us knowledge about the page. And the third one is I found the hook for the audience is slightly less. That's all. What was the third point, Navraj? Hook for the audience is slightly less. Hook for the audience is not there. Okay. Hook for the audience is there. Okay. Also, guys, you have to document all your confrontations in the confrontation and encounter session card. Okay. वो आप लोग फेयर कर लिया करो. यहाँ पे तो आपने बता दिया, बट इसके बाद में आपको जाना है, कार्ड ओपन करना है और कार्ड में प्रेजेंटेशन का नाम डालने के बाद अपना कन्फ्रंटेशन वहाँ पे लिखना है. क्योंकि कन्फ्रंटेशन और एनकाउंटर सेशन हम अलग से करेंगे. जो जिसके जो भी वीक पॉइंट्स मिलेंगे उसके हिसाब से उसको लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे ताकि और भी बेटर प्रेजेंटेशंस हमारे सामने आ सकें. उन चीज़ों को, जो हमारी कमियां हैं, हमारी टीम की कमियां हैं, वो हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और फिर उसके ऊपर काम करके उसको सॉल्व भी कर पाएंगे. ठीक है, थैंक यू नवराज. मूविंग ऑन टू पवन राहुल. Hello, sir. I'm Pawan Rahul from Cloud Computing team. So my confrontations are they were switching slides too fast, so I couldn't go through all slides. And
Right. Good Uh, point. as and the slides were less, and I didn't read the content that fast. That's So switching the slides was too fast. What was the second confrontation? means the content was less. Means slides were Slide less. content. See, Yes. it is not necessary that you need to have more content. It should be explanatory. 1 or 2 slides could have been added. That is fair, but it is fine. See, less is more. Understand this, because Okay. in IT, if you can express what you have done, that is best. Even if you can express it in 1 slide, it is also fine. Okay. As well as I think they have 13 slides. Okay. The minimum requirement of the slides, which I have mentioned, is I guess 7. So 6 or 7 at most, where there is an introduction, team introduction, XYZ, plus the content of 2-3 slides. So the minimum requirement for the slides is 6 or 7. Above that is enough. Okay. Secondly, with respect to content, I don't want to comment much. I'm not accepting that as of now. We will do that. We will sit that in the justification round, and we'll discuss on it. You have to write your confrontation, Pawan, but we'll discuss on Means I don't know that much about web development, so that absolutely. So that you can write your confrontation. So where we will find that there are people, those who don't have an idea, and if they are interested into it, so we could organize a beginner friendly web development session also. Okay, a training session where you can design a simple page, export it into Anima so that the team members get to know it. Okay. But that is for the people, those who belong to your own group, the web developer group, because currently cloud does not need, web development part. Every team has their different scope of work and different implementations. When they will give code to you, then you have to deploy it on cloud. That is what is your job at the moment. Is that clear? yes, sir. Right. Okay. Yeah. So that's fine. So number of slides and content is not necessary. There should be minimum number of slides, which could be 5, 6, 7, 6 or 7. That is an identical number. Less is more, and it was fine. What was your third confrontation? Don't have a third one. No, you need to have the third one. Otherwise, now you need to have 2 more, because 1 is void. 2 more confrontations are required. Otherwise, we'll give you an LE. 2 और गलतियां ढूंढो, सोचो ढूंढ के निकालो गलती. Means other guys said no, sir. Like those font size was small. नहीं, किसी और का कॉपी नहीं कर सकते आप. Yes. अपने कन्फ्रंटेशंस बताने हैं. चलो याद कर लेना, ठीक है. एटलीस्ट 3 आपको डालने हैं कन्फ्रंटेशन बोर्ड पे, ठीक है. एंड डू नॉट कॉपी. आई विल चेक कि आपने कॉपी नहीं किया है दूसरों से. Okay. ठीक है. ओके, चलो. एंड ठीक है. So Pawan, Rahul, you have to add at least 3 different confrontations, whatever you feel like, and then we'll discuss on those points. Okay, moving on to Yash Javle. Okay, so my first concentration is like in the after in the live demonstration they have showed the HTML CSS code. So I think instead of that they have time constraints, so they could have shown the Netlify homepage or some dashboard like that. And second constraint is that they displayed some slide of SDLC. So like I think it was the most powerful slide. So if they could have explained the building, the documentation, and how will they maintain the website. So that would have been the most positive point of the whole presentation. Absolutely. And my third constraint is that constraint नहीं, confrontation. ये second वाला confrontation था ही नहीं, वो तो appreciation था. Third concentration is like when they were actually वो बहुत बढ़िया था, जिसमें learning and understanding कहाँ से लिया हमने,
XYZ वो जो स्लाइड्स डाली ना वो बहुत बेहतर था, मैंने अभी तक किसी के प्रेजेंटेशन में नहीं देखा, और ये पॉइंट मुझे लगता है कि कंपलसरी करूंगा मैं नंबर ऑफ स्लाइड्स के अंदर, वो बहुत बढ़िया था। ठीक है यश, तो आपका पहला कन्फ्रंटेशन लाइव डेमो में जो डायरेक्ट दिखा सकते थे लाइव डेमो, दैट इज फाइन। अभी 2 कन्फ्रंटेशंस आपको और देनी है। Okay, so they were explaining, so they could have used some like highlighter. So like the page can have many content. So like we could not relate which point they were talking. So they could have used some type of like marker or some highlighter. So, Absolutely, very good point. There should be a highlighter, pointer, okay, on the slide, which you can use, which could actually draw the attention of the person that at what place you are speaking and what you are actually trying to speak. Okay. Even though they have, marked on the slides, they have marked certain arrows. So that was fine. It was little meaningful, but yes, there is a scope of adding a pointer to point at the live presentation so that a person can focus. Okay, that's good. Third confrontation, Yash. okay, third, I think there was a constraint of time, so they could not explain the Anima software. So like it was like not very understandable to the beginner. So they should have spent more time in explaining to. Right. Like Okay. we could have given this time to PPT 1 or 2 slides. Okay, that's fine. Explanation of Anima app could have been better. A little introduction to Anima app would also have been a good add-on on a slide, that what is Anima, okay, or what is XD, or what is Figma. So ये भी slides एक दो आ सकती थी जिसके ऊपर आप explain कर सकते हैं कि Anima is a high prototype fidelity application with which you can export your designs into code. ऐसा कुछ एक statement आ सकता था tool के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द टूल, अगर पूरा डेमो में नहीं भी जा सकते बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छा पॉइंट बोला यश ने कि आप उसका जो उस टूल का जो एक होता है ना, वेबसाइट पे जाते ही एक वो बायलाइन लिखते हैं, तो वो बायलाइंस आप यूज कर सकते हैं। वो बायलाइंस काफी इफेक्टिव हो सकती हैं और डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं लोगों के लिए। तो जो नए ग्रुप के भी लोग हैं उनको भी नए नए टूल्स के बारे में पता चलता रहेगा कि भाई ठीक है क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, एंड एक आप लोगों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस, गुड पॉइंट्स। मूविंग ऑन टू सुशील। सुशील, योर टर्न। Good evening, everyone. My name is Sushil Chinde. I am from Python Developers Group. My confrontations are like first. Sir, actually, I have a problem with webcam. It is showing an error that. Fix it. Next time. Yes, sir. Okay, please go on. So first confrontation is that the presentation work was not equally divided. Like Shakambar was the only who have delivered the more content. Even there was a 13 slides. For the other 2 members, he has given only one slide. Okay, nice. Presentation work was not equally divided, as well as the complete presentation you are talking, right? Yes, sir. Right from presentation to demo. So the work was not equally divided. So it looks like only Shakambar has done all the job and the other 2 members have just been a part. Is that so you are trying to say, Sushil? Yes, sir. Yes, sir. सुशील, आप क्या कह रहे हो कि चिरंजीव ने कुछ काम नहीं किया इसके अंदर? चिरंजीव not directly, but it was looking like that. अच्छा, ठीक है। एंड आदित्य ने तो बिल्कुल काम नहीं किया है। सर वैसे उन्होंने कहा भी था कि मतलब बाकी टीम मेंबर्स एक्टिव नहीं है, तो वो दिख गया यहाँ पर। 3 एक्टिव टीम मेंबर्स थे, बट ठीक है, एनीवेज वो ठीक है। तो काम देखो ठीक है, टीम लीडर मतलब बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो इक्वली डिवाइडेड होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक स्लाइड होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी लिखा है, दैट हु इज डूइंग व्हाट, है ना। 2-3 चीजें होती हैं, एक प्रेजेंटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन में तीनों लोग पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को मेंशन करना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि टीम तभी स्ट्रांग है जब सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो कल को शकंबर बोले कि ठीक है भाई मैं नहीं कर रहा,
तो बाकी टीम तो हेल्पलेस हो जाएगी, तो पूरा का पूरा ग्रुप हेल्पलेस हो जाएगा, ठीक है ना। सो उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि बाई चांस कल को अगर शकंबर को कोई एक इशू आ जाता है तो जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो भी सेम लेवल का प्रेजेंटेशन दे सके, ठीक है। बिकॉज एक रिसोर्स की नॉन अवेलेबिलिटी ड्यू टू एनी इमरजेंसी, ड्यू टू एनी रीजन, उसकी वजह से प्रोजेक्ट सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से बिजनेस सफर नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इक्विवेलेंट डिवीजन बहुत जरूरी है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर हो सकता है जो आपका मेन लीड है वो है ही नहीं, ठीक है, कुछ परेशानी आ गई और अब आप लोग लाइव ऑडियंस के सामने जा रहे हो, तब क्या करोगे। तो प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा सभी को रेडी होना चाहिए, A to Z, राइट फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, ठीक है, बट इक्विवेलेंट डिवाइडेड भी होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू आर रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। कभी मान लो उसका टेक्निकल इशू आ जाता या XYZ कोई इशू आ जाता, ठीक है, तो बाकी लोग अगर प्रिपेयर्ड नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए तो अटक जाएगा काम, ठीक है ना। तो वी हैव टू बी इक्वली डिवाइडेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरिंग कंप्लीट प्रेजेंटेशन एज वेल एज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वली डिवाइडेड एज वेल। बट मैंने एक चीज देखी आप लोगों को का, जब ग्रुप की तैयारी चल रही थी तो काफी सारी मीटिंग्स आप लोगों ने की भी हैं, 2-3 मीटिंग्स आई थिंक मेरे पास भी नोटिफिकेशंस आ रही थी कि मीटिंग्स हो रही हैं और काम मतलब कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं जो भी आप एक्टिव टीम मेंबर्स हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे, ठीक है, कि आपने कई बार 2-3 ट्रायल सेशन लिए और 2-3 ट्रायल सेशन लेने के बाद में आपने अपना प्रेजेंटेशन किया। इस वजह से आपका प्रेजेंटेशन मतलब काफी अच्छा था, मतलब कंपैरेटिव जो हम 3-4 दिनों से प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और जो लोग बहुत बहुत दिनों से मतलब 3-3 4-4 महीनों से, मैं किसी को डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट 3-3 4-4 महीनों से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मतलब मीनिंगलेस रहे हैं, ठीक है। बट आप लोगों को बहुत ही कम समय में अपॉर्चुनिटी दिया गया, आपने अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया और मतलब समथिंग मीनिंगफुल यू हैव ब्रॉट, ओके, एंड आई कैन सी द नेक्स्ट स्टेप। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगला स्टेप देख पा रहा हूँ कि मैं ऑल ऑप्शंस जो हैं, जैसे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो 38 प्लेलिस्ट का जो है उसमें बहुत सारे पेजेस बनने हैं, ठीक है, और नए डिजाइन्स के हिसाब से बनने हैं। तो आई थिंक मैं अब आप लोगों को अपलैब्स शेयर करूंगा, उस पर और भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं। थोड़ा पहले अपने आप को हैंड्स ऑन कर लो कि आप कस्टम डिजाइन्स को अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर पा रहे हो और उनको वैसा ही बना पा रहे हो जैसा कि डिजाइन में है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा गैप उसी चीज में है। आप एक्सपोर्ट तो कर लोगे लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद जो ट्विक्स करने हैं सो दैट इट लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर, वहां पे चैलेंज है। तो वो अगला चैलेंज सॉल्व करना है, कम से कम 5-6 अलग अलग दूंगा अपलैब्स के आर्टिकल्स, अकाउंट रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस आप लोगों को शेयर करना है, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। 4-5 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस कीजिए, अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाइए और डिजाइन बनाने के बाद आपको डेटाबेस टीम, क्लाउड टीम और बैकएंड पाइथन टीम के साथ में कनेक्ट कर दूंगा मैं। पाइथन टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कई प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, तो हम जैंगो को लेकर के चलेंगे अपने बैकएंड डेटाबेसेस के लिए, ठीक है। तो फ्रंट एंड आप लोग बनाएंगे, जैंगो के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। डेटाबेस में भी प्रभजोत हैं, काफी बहुत ही मतलब बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि और क्लाउड टीम ने भी अच्छा काम किया है, जैसा कि मुझे नेहा ने बताया था कि आप लोगों ने कहीं फंस गए थे कुछ नए कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, बट वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम बन रहा है ना वेब डेवलपमेंट की एप्लीकेशंस की डिलीवरी करने का, वो आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। सो कीप द स्पिरिट हाई एंड विल बी डूइंग इट अकॉर्डिंगली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है सुशील का हो गया ना, प्रभजोत योर टर्न। हेलो सुशील सर। सुशील अभी एक ही हुआ ना कन्फ्रंटेशन, दो यस और सर। देने, दो और देने, हाँ जी। So my next confrontation is that at the time of beginning, basic introduction of what we are going to do was missing. Like मुझे मतलब एंड में जाके पता चला कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे, मतलब जो डिजाइन से कोड बना सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट।
And the third is, as earlier someone has said, that it was a very fast slide switching. आपको भी फास्ट लगा? Yes, sir, because there were 13 slides, and they have finished it in very much less time. ठीक है. Switching plus fast movement of slides, as in यही लिखूं? Yes, sir. ठीक है. वैसे आप लोगों को अपना फेयर करना है, बट मैं पॉइंट्स नोट इसलिए करता जा रहा हूँ कि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे और अकॉर्डिंगली मैं एलीज दे सकूं ताकि इंप्रूवमेंट्स हो सके हर सेक्शन में, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक ग्रुप की प्रॉब्लम होगी. लगभग हर ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कॉमन आएंगी. जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, स्लाइड्स की कॉमन प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स को बेनिफिट होगा ये कन्फ्रंटेशंस जो हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू प्रभजोत. Hello everyone, I am Prabjot Singh. I am a database admin intern at Hackveda. I felt that the presentation was good and most of the points were covered in the confrontation, but I have 2-3 more points. Firstly, I felt that the switching of the slides was fast because I was reading one of the content and then the slide was switched to the next one. So I couldn't read that one. Another one, I feel that the body movement and posture of the first speaker, that is Shakambar, was more of a streamer than that of a presenter. And That's fine. ये ठीक है, ये पॉइंट नहीं कर सकते ऑनलाइन मीटिंग में है, because he has a setup. Actually, as we can see, he has a very nice setup of a yes, streamer. I felt the same. हाँ, that's fine. सेटअप से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट दैट अगर आपका बैकग्राउंड वियर्ड है, ठीक है, अनोइंग बैकग्राउंड है, अगर आप उसकी वॉइस क्लियर नहीं सुन पा रहे, उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे, ठीक है, डिजीनेस अगर ऐसा कुछ है, मतलब इन पर्सन वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, बट सेटअप के लिए हम नहीं बोलेंगे. जैसे उस दिन ये अर्थ दोषी के में भी केस आया था, क्योंकि उसने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा था, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. वो छोटी मोटी चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको कन्फ्रंटेशन नहीं मानेंगे अगर सेटअप है. ठीक है, मेरे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे रूम में ना लाइट की कोई एक ऐसी पोजीशन है जिस वजह से मैं ऐसे बैठूं कि मतलब एक बेटर अपीयरेंस दिखे, ठीक है, इन द मीटिंग्स. सो दैट इज फाइन. ठीक है, बट हाँ, ये सेटअप के लिए हम नहीं कॉन्वर्जेशन करेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा वियर्ड सेटअप है तो जरूर हम उसके बारे में जरूर बात करें. ठीक है, बट दिस इज फाइन. Another one was that the conclusion wasn't there and the rest of the speakers were not given much content. The other two speakers, Chiranjeev and Aditya. Conclusion missing and less division of roles. Is it? Yes, sir. Division of roles and responsibilities. ठीक है, तो ये बात अच्छी है कि ठीक है शकंबर, आप समझ रहे हो ना कि खुद एज अ टीम लीडर आपने काम तो बहुत जबरदस्त किया, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको काम करना भी है और अपनी टीम के साथ करवाना भी है, और उनके रोल्स भी इक्विवेलेंट डिवाइडेड होने भी बहुत जरूरी हैं ताकि एक बैलेंस्ड टीम सामने निकल करके आ पाए. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेंबर. 3 हो गए कन्फ्रंटेशंस प्रभजोत के भी. प्रभजोत और हैं कन्फ्रंटेशंस? Sir, that's it. That's it. Okay. Sushil, you have any more points? आपका hand raise है. No points, sir. अपना okay, hands on. Divakar, your turn. Hi, good evening, sir, and good evening, Neha ma'am, and good evening to all of you. And my name is Divakar Saxena, and I'm from Cybersecurity Group. And first of all, before I confront anything, I want to tell you that I have joined the meeting 10 or 15 minutes late because the result was declared for third year, and I was busy in that thing. So sorry for that. And as I have joined late, but I have seen Shakambar presenting, and I have seen your slides, Shakambar. Your slides was good and was fine, was good, and the way you speak is also good. You don't speak too much fast,
not too much slow. Your speed is average. And if there is any confrontation, as Sir said, we have to find out at least 3 of your mistakes or confrontation. I'm going to watch the recorded video and I will surely find 3 confrontation. And I will tag you on the Trello board and the common board, and I will let you know for sure. That's great. That's great. That's the spirit. So guys, in case if you are unable to find out the confrontations during the meeting, you can watch the recorded session also and then confront. ठीक है, अगर आप लेट ज्वाइन हो गए बाई चांस या XYZ, ठीक है, अगर ऐसा कुछ इशू है, अदरवाइज कोशिश यही करना है कि कन्फ्रंटेशन हम कर लें मीटिंग के ड्यूरेशन में ही, अगर टाइम होता है तो। अगर टाइम नहीं होता है तो फिर तो कन्फ्रंटेशंस बोर्ड पे आनी है, तो वीडियो रिव्यू करके आप कन्फ्रंटेशंस करें, ठीक है। जो बाकी टीम मेंबर्स आपके नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं मीटिंग किसी भी रीजन की वजह से, उनको भी कहिए कि आप वीडियो देख करके कन्फ्रंटेशन करो, ठीक है, बिकॉज हमें तो अपनी इम्प्रूवमेंट से मतलब है, ठीक है, चाहे वो वीडियो से करें चाहे प्रेजेंटेशन से करें। प्रेजेंटेशन में होना जरूरी है, तब एक एक्टिव टीम दिखती है। वीडियो से देख रहे हैं, कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस भी दे दीजिए प्रॉपरली कि कनेक्टिविटी होना, कम्युनिकेशन एंड फॉलोअप होना बहुत जरूरी है, कन्फ्रंटेशंस होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना हमारा मेजर रोल है, ठीक है, in the presentations that will eventually improve the presentations, ठीक है। और किसी के confrontations रहते हैं? Hands सारे raise down हो गए हैं। Anybody? Any more confrontations? Let me know. Raise your hands in case if anybody is left. Okay, cool. So I think we are done. So all in all, the presentation was good. Slight improvements are required. So I believe you all will be working on it. And I request all the other team members to write their confrontations on the board so that we can take it in the confrontation and encounter session, and we'll work towards the improvement. See you guys. Take care. Have a great day. Divakar, I think you have presentations tomorrow. Yes, sir. I'm ready for that.